गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ड्राफ्ट आईटी डिजिटल कोड रूल्स 2026। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है ड्राफ्ट आईटी डिजिटल कोड रूल्स ताकि रेगुलेट हो सके ऑब्ससीनिटी और इंट्रोड्यूस हो सके मैंडेटरी एज बेस्ड क्लासिफिकेशन सभी डिजिटल कंटेंट के लिए। तो इंडिया का जो डिजिटल इकोसिस्टम है वो रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है विद ग्रोथ ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, यूज़र जनरेटेड कंटेंट। इसने कंसर्न्स रेज किए हैं रिलेटेड टू ऑब्ससीनिटी, हेट स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन, हार्मफुल कंटेंट, खासकर चिल्ड्रन के लिए। इस कंटेक्स्ट में प्रपोज ड्राफ्ट आईटी रूल्स जो हैं वो एम कर रहे हैं कि इंट्रोड्यूस करें एक ज़्यादा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ड्राफ्ट रूल्स जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं सेक्शन 87 ऑफ आईटी एक्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बीच में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। तो ड्राफ्ट जो है वो हैविली बोरो कर रहा है प्रोग्राम कोड अंडर द केबल टेलीविजन एंड नेटवर्क रूल्स ऑफ 1994, जिसमें ऑब्सीन कंटेंट को डिफाइन किया गया है। अब मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस में जो प्रपोज किया गया है वो है कंपलसरी एज क्लासिफिकेशन फॉर ऑल डिजिटल कंटेंट, जैसे कि फिल्म सर्टिफिकेशन में होता है यू 7+13 7, 13, 16 एडल्ट कंटेंट। तो हर कंटेंट जो आइटम है वो डिस्प्ले करेगी एज रेटिंग और कंटेंट डिस्क्रिप्टर्स। ओके, तो ये ड्राफ्ट मैंडेट करता है पेरेंटल कंट्रोल मैकेनिज्म्स, रिलायबल एज वेरिफिकेशन सिस्टम्स और एक एडिशनल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन भी लगाता है ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, खासकर ओटीटी सर्विसेज और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के ऊपर। सभी जो प्रोविजंस है आईटी रूल्स 2021 के वो अभी भी अप्लाई होंगे अलोंग साइड दिस न्यू ड्राफ्ट कोड। और ये रूल्स जो है वो सिविल कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे वायलेशंस के लिए। ठीक है, तो अब कंसर्न्स भी ये रेज किए जा रहे हैं कि ये जो रूल्स हैं ये टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और ऑन डिमांड डिजिटल कंटेंट को सेम जो है वो प्लेटफॉर्म पर सोच रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो पुल मॉडल पर ऑपरेट करते हैं, जबकि जिसमें कि यूज़र जो है वो खुद कंटेंट को एक्टिवली चूज़ करता है, जबकि टीवी में तो पुश मॉडल होता है। तो ब्रॉडकास्ट और एरा के जो ऑब्ससेनिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो आजकल के पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्लेटफॉर्म्स पर कैसे जो है वो एप्लीकेबल हो सकते हैं। और ब्रॉड और सब्जेक्टिव टर्म्स का यूज़ किया गया है, जिससे कि वैसे आर्बिट्ररी कंप्लेंट्स और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डीआरडीओज हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 77th रिपब्लिक डे परेड ऑन कर्तव्य पथ जो है उस पर डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो अनवील किया है फर्स्ट टाइम। ये सिस्टम जो है वो इंडियन नेवी के कोस्टल बैटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा और एंगेज करेगा बोथ स्टैटिक एंड मूविंग टारगेट्स एट रेंजेस ऑफ अप टू 1500 किलोमीटर्स। तो ये जो एंटी शिप मिसाइल है ये क्वाजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा है और ये हाइपरसोनिक स्पीड्स ऑफ मैक 10 अचीव करेगा इनिशियली, और फिर उसके बाद मैक 5 की स्पीड पर सस्टेन करेगा। लो ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकता है एक्सट्रीम स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी के साथ। और मिसाइल जो है वो लार्जली अनडिटेक्टेबल रहेगा एनिमी ग्राउंड और शिप बेस्ड रडार्स को। 2 स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर यूज़ करता है मिसाइल और हाई एरोडायनामिक एफिशिएंसी है इसमें, ताकि जो कि इनेबल करती है इफेक्टिव लिफ्ट विद मिनिमल ड्रैग। तो 1500 किलोमीटर की रेंज को सिर्फ 15 मिनट्स में कवर कर लेगा। तो एनिमी रिएक्शन टाइम बहुत ही कम हो जाएगा उसकी वजह से। इसकी जो एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट्स हैं 3500 किलोमीटर तक की रेंज के, वो भी डेवलपमेंट में है। तो ये सभी क्लासेस ऑफ वॉरशिप को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और नेवी की कोस्टल बैटरीज के बियॉन्ड आर्मी और एयरफोर्स वर्जन्स भी जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो डीआरडीओ 2 पैरेलल हाइपरसोनिक पाथ्स फॉलो कर रहा है, हाइपरसोनिक ग्लाइड और हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल्स। तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल क्या होता है, इसको रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया जाता है हाई ऑल्टीट्यूड पे और फिर ये डिटैच हो जाता है। ग्लाइड होता है, मैन्यूवर करता है ये एटमॉस्फेयर के थ्रू और स्पीड्स अचीव कर लेता है जो कि 5 मैक्स से ज़्यादा की होती हैं। और ग्लाइड व्हीकल्स के कंपैरिजन में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स क्या होते हैं, ये फ्लाई करते हैं विद इन द एटमॉस्फेयर एट हाइपरसोनिक स्पीड्स और स्क्रैमजेट इंजन्स पर जो है वो रिलाई करते हैं। तो अब हम ये भी देख लेते हैं रैम जेट्स और स्क्रैम जेट्स में क्या फ़र्क है। रैम जेट्स बेसिकली एयर ब्रीदिंग इंजन्स हैं और ये लगभग मैक 3 तक की स्पीड पर वर्क करते हैं। स्क्रैम जेट्स जो हैं वो एयर फ्लो को सुपरसोनिक रखते हैं कंबशन चैम्बर में और 5 मैक तक की स्पीड से ऊपर के जो है वो यूज़ में आते हैं।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रीमाउंट एंड वेटरनरी क्रॉप्स। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड सॉरी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक डे परेड में एनिमल्स जो है वो रिप्रेजेंट हुए थ्रू इंडियन आर्मीज रीमाउंट एंड वेटरनरी क्रॉप्स। तो ये स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स हैं इंडियन आर्मी की जो ब्रीडिंग, रेयरिंग और ट्रेनिंग ऑफ आर्मी एनिमल्स करते हैं। तो ये इंश्योर करते हैं ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ दीज एनिमल्स कॉम्बैट, रिकॉनेसेंस और लॉजिस्टिक्स के लिए, और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरठ में इनका हेडक्वार्टर है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांचेज है इंडियन आर्मी की, 1779 में बंगाल में बनाई गई थी। वाइटल रोल प्ले किया है इन्होंने सभी कॉन्फ्लिक्ट्स में और इवन मिलिट्री डिप्लोमेसी स्ट्रेंथन करने में भी इनका रोल रहता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सार्क कमेटी। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएफआरडीए ने रिसेंटली एक कमेटी बनाई है इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स की, ताकि वो रिकमेंड कर सके और मॉडर्नाइज कर सके इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क अंडर एनपीएस। एक हाई लेवल कमेटी है इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स की रिव्यू, रिकमेंड और मॉडर्नाइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर्किटेक्चर ऑफ एनपीएस को स्ट्रेंथन करेगी और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करेगी एग्जिस्टिंग एनपीएस इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस का फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जीवन रक्षा पदक अवार्ड्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जीवन रक्षा पदक अवार्ड सीरीज ऑफ अवार्ड्स दिए हैं 30 लोगों को। तो ये अवार्ड्स जो है मेरिटोरियस एक्ट जो है ह्यूमन नेचर का, जिसमें कि आप किसी लाइफ को सेव करते हो उसके लिए रिकॉग्नाइज करने के लिए दिए जाते हैं। तो इसमें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदम, जीवन रक्षा पदक दिए जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या होती है, सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इवन पोस्ट्यूमस भी दिया जाता है ये अवार्ड। तो नॉमिनेशंस जो हैं वो एनुअली जो है स्टेट्स और यूटीज से और यूनियन मिनिस्ट्री से मांगे जाते हैं, और फाइनल अप्रूवल जो है वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के देने के बाद ही अवार्ड दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बैसिलस सबटिलिस। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केरला ने बैसिलस सबटिलिस को स्टेट माइक्रोब डिक्लेयर किया है। तो बैसिलस सबटिलिस एक टाइप ऑफ प्रोबायोटिक है जो नेचुरली ह्यूमन गट में पाया जाता है। इवन फर्मेंटेड फूड्स में भी होता है, मोस्टली ये सॉइल और वेजिटेशन में पाया जाता है। इसके पास एबिलिटी होती है प्रोड्यूस और सिक्रीट करने की एंटीबायोटिक्स को। तो सबटिलिस जो है ये नॉन पैथोजेनिक है, लेकिन ये कंटेमिनेट कर सकता है फूड को, और इसको सीड्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स में यूज़ किया जाता है एज फंजीसाइड, और ये केपेबल है ऑफ प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स फॉर इंसेक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मीर आलम टैंक। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 9 वर्कर्स और इंजीनियर्स जो कि मीर आलम टैंक पर काम कर रहे थे उनको रेस्क्यू किया गया है क्योंकि उनकी बोट माल फंक्शन हो गई थी। तो मीर आलम टैंक लोकेटेड है हैदराबाद में। ये एक हिस्टोरिक रिजर्वायर है, साउथ ऑफ म्यूसी रिवर पर पड़ता है। प्राइमरी सोर्स था ये ड्रिंकिंग वाटर का हैदराबाद में, बिफोर ओस्मान सागर और हिमायत सागर रेजर्वायर्स। ठीक है। तो ये जो है मीर आलम बहादुर के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जो प्राइम मिनिस्टर था हैदराबाद का आसफ जहाँ के रेन में के टाइम पर, थर्ड निज़ाम ऑफ जो हैदराबाद थे। तो जो ये टैंक है डिज़ाइन किया गया है एक फ्रेंच इंजीनियर, और ये सेमी सर्कुलर आर्क्स फीचर करता है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Draft IT Digital Code Rules 2026. This topic is important for your governance section. Union government has proposed the Draft IT Digital Code Rules 2026 to regulate obscenity and introduce mandatory age-based classification for all digital content. So India's digital ecosystem has expanded rapidly with the growth of OTT platforms, social media, and user-generated content. But it has therefore also raised concerns related to obscenity, hate speech, misinformation, and harmful content, particularly for children. So, in this context, these draft IT rules have been framed to introduce a more detailed content classification and compliance framework for digital platforms. These draft rules have been proposed under Section 87 of the IT Act of 2000. This proposal is following a Supreme Court direction which asked the government to strike a balance between freedom of speech and reasonable restrictions. So these draft rules borrow heavily from the program code under the Cable Television Network Rules of 1994, which defined the obscene content. A major structural change proposed in this system is the compulsory age classification of all digital content, similar to film certification. Okay, so each content item must display age rating and content descriptors.
The draft mandates parental control mechanisms for content rated 13 plus and above, reliable age verification systems for adult only content. This places additional compliance obligations on platforms, particularly OTT services and social media intermediaries. All provisions of the IT rules 2021 will continue to apply alongside the new draft code. These rules are expected to introduce civil consequences for violations, increasing regulatory accountability for online curated content providers. The rules also blur the distinction between linear television broadcasting and on-demand digital content. OTT platforms also operate on a pull model where users choose content actively, unlike TV's push model. Applying broadcast era obscenity standards to age-gated, password-protected platforms may also reduce creative freedom, and broad and subjective terms could also encourage arbitrary complaints and regulatory uncertainty. So these are certain concerns which have been raised by industry and stakeholders. So the next topic is DRDO's hypersonic glide vehicle. This topic is important for your security section. At the 77th Republic Day parade on Kartavya Path, DRDO unveiled the long-range anti-ship hypersonic missile. This system is tailored to meet the Indian Navy's coastal battery requirements and can engage both static and moving targets of range at ranges of up to 1500 kilometers. So this missile follows a quasi-ballistic trajectory. It reaches hypersonic speeds of Mach 10 initially and then sustains average speeds of Mach 5 using multiple atmospheric skips to evade the interception. It flies at low altitude with extreme speed and maneuverability, so therefore it remains largely undetectable to enemy ground and ship-based radars. The missile also uses a two-stage solid rocket motor. So, as per the scientists, this missile has high aerodynamic efficiency, enabling it to generate shift effective lift with minimal drag. So, this missile can travel at high velocities, so therefore it can cover 1500-kilometer range in about 15 minutes, sharply reducing the enemy reaction time. Extended range variants of up to 3500 km are already under development. This missile can neutralize all classes of warships. Beyond the Navy's coastal batteries, Army and Air Force versions are under consideration. Okay. Amid intense global competition, the DRDO is pursuing two parallel hypersonic paths: hypersonic glide and hypersonic cruise. A hypersonic glide vehicle is launched via ship via rocket into high altitudes, then detaches to glide and maneuver through the atmosphere at speeds exceeding Mach 5. Unlike glide vehicles, hypersonic cruise missiles fly within the atmosphere at hypersonic speeds and rely on scramjet engines for sustained powered flight and high maneuverability. Ramjets are basically the air breathing engines which compress incoming air using forward motion. They need assisted takeoff and work best around Mach 3, losing efficiency at hypersonic speeds. Scramjets keep airflow supersonic in the combustion chamber, enabling efficient operation above Mach 5, but they are far more complex to design and operate. Okay. So the next topic is remount and veterinary corps. This topic is important for your security section. Recently, during the Republic Day parade, more animals were represented uh, by the Indian Army's remount and veterinary corps. So this is a specialized corps of the Indian Army and is responsible for the breeding, rearing, and training of army animals, including horses, mules, and army dogs. It ensures the operational readiness of these animals for combat, reconnaissance, and logistics, and it also provides veterinary care and supporting counter-terrorism operations. Its headquarters is located in Meerut. So RVC is one of the oldest branches of the Indian Army, and it was established in Bengal in 1779. It plays a vital role in all conflicts. It is also involved in the strengthening of military diplomacy, and it allows the participation in UN missions and providing trained animals to friendly countries. So the next topic is SAG committee. This topic is important for your economy section. PFRDA has recently constituted a committee of investment experts to recommend and modernize the investment framework under the NPS. So it's a high level committee of investment experts to review, recommend, and modernize the investment framework under the NPS. This will strengthen the long term investment architecture of NPS by improving diversification, enhancing risk management practices, and expanding the investment choices available to all subscribers. So this committee has been tasked with the undertaking of comprehensive review of existing NPS investment guidelines for both government and non-government sectors.
So the next topic is Jeevan Raksha Padak Awards. This topic is important for your governance section. So President of India has conferred the Jeevan Raksha Padak series of awards 2025 to 30 persons. It is awarded to a person for meritorious act of human nature in saving the life of a person. So this award is given in three categories, namely Sarvottam Jeevan Raksha Padak, Uttam Jeevan Raksha Padak, uh, Jeevan Raksha Padak, and the persons of all walks of life are eligible for these awards. These awards can also be conferred posthumously. So its nominations are invited annually from states or UTs and union ministries. But its final approval is given by the Prime Minister and the President of India. So the next topic is Bacillus subtilis. This topic is important for your environment section. Kerala has officially declared Bacillus subtilis as state microbe. So this is a type of probiotic which is found naturally in human gut. It is also found in the fermented foods. Uh, it is spore forming, motile, rod shaped, gram positive, facultative, aerobe. It is mostly found in soil and vegetation with an optimal growth temperature from 25 to 35 degrees Celsius. It has the ability to produce and secrete antibiotics. It is non-pathogenic, but it can contaminate foods and be considered an opportunistic pathogen among the immunocompromised. It is used on seeds, vegetables, and plants as a fungicide. Some strains of it are capable of producing toxins for insects also. So they are used by farms to protect their crops. Uh, uh, so the next topic is Mir Alam tank. This topic is important for your economy section. 9 workers and engineers working on Mir Alam tank were rescued after their boat malfunctioned in the middle of the lake recently. So Mir Alam tank is located in Hyderabad and it's a historic reservoir to the south of the Musi River. It was the primary source of drinking water for Hyderabad before the Osman Sagar and Himayat Sagar reservoirs were built. So this tank has been named after Alam Bahadur, who was the then Prime Minister of Hyderabad during Asaf Jah III's reign, the third Nizam of Hyderabad. This tank was designed by a French engineer and features semi-circular arcs. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.